करूँ आज? रतन चित्त इसमें पूरा नहीं है ना, इसमें पूरा नहीं, इसमें पूरा नहीं, उसमें जहाँ मैंने कागज लगाया इसमें से पूरा नहीं है, जहाँ तक मुझे देख लेंगे। ये तो उसमें वो है, आप इसमें से पढ़ लेना ना, उसमें आएगा ना, इसमें आएगा तो फिर तो कोई आप इसमें से पढ़ लेना ना, कति इसमें नहीं है पूरा, नाम होता है सब होगा, इसमें पूरा नहीं है, इसमें होगा। मैं कैसे पढ़ूँगा? लाइट से चल तो कैसे इतना पर रोशनी आती नहीं ना लोग। अच्छा अच्छा, मैं तो गर्म चीज शक्ल नहीं दिखती, कहीं उसने कल भी कहा था कि किसी ने कहा कि शक्ल नहीं दिखती हो रही थी, अच्छा लगा। आज कर जो सर सीट कम रास्ता शाम लो है ना, इस तरफ रखो थोड़ी, इस तरफ मेरी तरफ लाओ, उधर इनका का परस लेना कैंडल की इधर लो कर दो, क्या करें तो आप थोड़ा इधर कर लो, मेरी तरफ ना उल्टा इस तरफ यूं जैसे रखा है उसको इस डायरेक्शन में नहीं, उससे ये लो इस तरफ को रहेगी ना, कापुर चुनो बैठती है पंखे के का, हाँ बस इस तरह अभी दिखाने तो रुकता मत ना भाई चुनो खबर पंखे के का। Connected to OnePlus 3G. Morning chanting, page 2. Yosu Bhagava Arhan Samma Sambuddho Swakhato Yena Bhagavata Dhammo Supatipanno Yassa Bhagavato Savak Sangho तमयं भगवन्तं सधम्मं ससङ्गं हिमेहि सकारी यथा अर्हम्
भगवा सुचिरपरिनिभूतोऽपि पश्चिमा जनतानुकम्पमानसा इमे सकारे दुगतपणा कारभूते पटिगणातु अम्हाकं दीघरतं हिताय सुखाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तम् अभिवादि स्वाखतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो साङ्घो संघं हन्दमयं बुद्धस्य भगवतो उगभाग्नमकारं करोमसे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स त्रिरत्न वंदना हंदमयम रतन तय प्रणाम गाथा यो चीव संवेग परिकीर्तन पाठन च बनामसि बुद्धो सुशुद्धो करुणामहन्नवो यो चंत शुद्ध पर ज्ञान लोचनो वन्दामि बुद्धं अहम् आदरेण तं धम्मोपदीपो वियतस्य सत्तुनो यो मग्गपाकामतभेदभिन्नको लोकोत्तरो यो च तदत्थदीपनो वन्दामि धम्मम् अहम् आदरेण तं संघो सुखेताभ्यतिखेत सन्नितो यो दिट्ठसन्तो सुगतानुबोधको लोलपहीनो अरियो सुमेधसो वन्दामि संघम् अहम् आदरेण तं पुण्यं मया यम मम सबुपद्दवा माहोन्तु ते तस्य प्रभावसिद्धिया इद तथागतो लोके उपन्नो अरहं सम्मा सम्बुद्धो धम्मो च देशितो नियानिको उपशमिको परिनिब्बानिको दगामि सुगतपवेदितो मयन्तं धम्मं श्रुत्वा एवं जानाम जातिपि दुःखा जरापि दुःखा मरणमपि दुःखं शोकपरिदेव दुःखदो मनस्सुपायासापि दुःखा अप्येहि संपयोगो दुःखो प्येहि विपयोगो दुःखो यमपीच्छं न लभति तमपि दुःखं संखितेन पंचुपादानखंदा दुःखा रूपपादानखंदो सेयतीदं रूपपादानखंदो वेदनोपादानखंदो संयोपादानखंदो संघारोपादानखंदो विज्ञानोपादानखंदो ये संपरिन्याय धर्मान सो भगवा एवं बहुलम सावके विनीति एवं भागा च पनस्य भगवतो सावकेषु अनुशासनी बहुला पवत्तति रूपम अनित्यं वेदना अनित्या संज्ञा अनित्या संखारा अनित्या विज्ञान अनित्यं रूपम अनत्ता
वेदना अनत्ता, संज्ञा अनत्ता, संखारा अनत्ता, विज्ञानम अनत्ता, सब्बे संखारा अनच्चा, सब्बे धम्मा अनत्ताति। विमयं पूतिनाम जातिया जरा मरणेन शोके परिदेवे दो मनस्ये उपायासे दुःखोदिना दुःख परिता। अप्पेव नाम इमस्य केवलस्य दुःख कन्दस्य अंतक्रिया पह्या ये थाति। चिरपरिनिब्बुतमपि भगवन्तं शरणं गता धम्मं च संघं च तस्य भगवतो शासनं यथा सति यथा मनसि करोम अनुपटिपजाम सासानुपटिपत्ति इमस्य केवलस्य दुःखकन्दस्य अंतक्रियाय संपतति। रतन सुत्ता की चांटिंग सुनेंगे आज। रतन सुत्ता विराट से किताब इसमें है। रतन सूत पेज 126 हिंदी चैंटिंग बुक। उसमें पूरा नहीं है शायद। पूरा नहीं है। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। यानि भूतानि समागतानि भूमानि वाया निवे अंतलिखे। सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अतोपि सक्कच्च सुनन्तु भासितं। तस्माहि भूतानि समेत सब्बे मित्तं करोत मानुषिया पजाय। दिवाच रत्तो हरन्ति ये बलिं तस्माहि निरक्षत अपमत्ता। यं किञ्चित् तं इधवा हुरं वा सग्गेषु आयं रत्नं पनीतं। ननो समं अत्ति तथागतेन इदम्पि बुद्धे रत्नं पनीतं। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। खयं विरागं अमृतं पनीतं यदज्जगासक्य मुनि समाहितो। नतेन धम्मेन समत्ति किंचि इदम्पि धम्मे रत्नं पनीतं।
ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. යං බුද්ධ සෙට්ඨෝ පරිවන්නයි සුචින් සමාධිමානං තයිකඤ්ඤ මාහෝ සමාධිනාතේන සමෝන විජ්ජති ඉදම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. යේ පුග්ගලාඨ සතම්ප සත්තා චත්තාරියේතානි යුගානි හොන්ති තේ දක්ඛිනේයා සුගතස්ස සාවකා ඒතේසු දින්නානි මහප්පලානි ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. යේ සුප්පයුත්තා මනසා දල්හේන නික්ඛාමිනෝ ගෝතම සාසනම්හි තේ පත්තිපත්තා අමතං විඝයිහ ලද්දා මුධා නිබ්බුතිං භුඤ්ජමා ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. යතින්ද කීලෝ පඨවින් සිතෝසියා චතුබ්බි වාතේභි අසම්පඛම්පියෝ තතෝපමං සප්පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සච්ඡානි අවෙච්ච පස්සති ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. යේ අරිය සච්ඡානි විභාවයන්ති ගම්භීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිංචාපිතේ හොන්ති බුසප්ප මත්තා නතේ භවං අට්ඨ මං ආදියන්ති ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජහිතා භවಂತಿ සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං ච සීලබ්බතං වා පියදස්සි කිංචි චතුහපායේ හිච විප්පමුත්තෝ චචාභිඨානානි අබබ්බෝකාතුං ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති
හෝතු කිංචාපිසෝ කම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසාවා අභබ්බෝ සෝතස්ස පටිච්චාදාය අභබ්බතාදිට්ඨ පදස්ස උත්තා ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වනප්ප ගුම්බේ යතා පුස්සිතග්ගේ ගිම්හාන මාසේ පඨමස්මින් ගිම්හි තතෝපමං ධම්ම වරං අදේසයි නිබ්බාන ගාමින් පරමං හිතාය ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වරෝරඤ්ඤෝ වරදෝ වරහරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේසයි ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කීනං පුරාණං නවං නත්ති සම්භවං විරත්ත චිත්තා ආයති කේ භවස්මින් තේ කීන බීජා අවිරුල්ලිච්ඡන්දා නිබ්බන්ති ධීරා යතා යම්පදීපෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යානිධ භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායා නිවේ අන්තලික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු යානිධ භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායා නිවේ අන්තලික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු යානිධ භූතානි සමාගතානි ආනිවායා නිවේ අන්තලික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන දුක්ඛා උපසමින්තුතේ ඒතේන සච්ච වජ්ජේන
භයාවෝපසමින්තු තේ ඒතේන සච්ච වජ්ජේන රෝගා උපසමින්තු තේ. Now we meditate for 45 minutes and listen to a desana by a short reflection by Ajahn Amaru on inconceivable, imperceptible. जो जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, जिसको महसूस नहीं कर सकते. Quality as subtle and profound as atamayata can seem a bit remote or intangible, hard to get a feeling for. This is indeed a subtle, refined way of looking at the nature of experience. Just because something is subtle, hard to grasp, doesn't mean to say that it's not useful, important. The quality of atamayata is speaking about that quality of awareness that is free of subject and object. And the mind is not creating a solid me here and a that, a world there. The freedom that comes from not creating those structures, not believing in them, not making them solid. That's essentially what this reflection, this way of seeing is intended for. To remove the apparent solidity the mind gives to words, ideas, perceptions. We say, that's beautiful, that's ugly, that person's inspiring, that person's irritating. It's my memory. I am going to. Tomorrow I will. Unconsciously the mind gives solidity to those judgments. This is useful, this is useless. This person's good, this person's bad. That solidity is something that the mind adds. Please stop writing. Listen. Thank you. The mind tries to capture its reality in words and concepts. But the point of this reflection is that there's no solid thing there. As the Buddha said, whatever you conceive it to be, the truth is always other than that. So when the mind says, good, bad, beautiful, ugly, right, wrong, delicious, awful, unconsciously,
it believes those judgments to be absolute, to be true, to be the whole story. But whatever we conceive it to be, the truth, the reality, is always other than that. It's more than that. There's more dimensions than that. So this reflection on Atamayata, and then its partners, emptiness, suchness, sunyata, tatata, these are all ways of emptying out, freeing the mind from its habitual judgments. To see that those judgments can only be partial, can only be relative, can only be one aspect of the picture. Yena yena hi manyanti tatatang hoti anyatati. Whatever you conceive it to be, the truth is always other than that. Luang Por was a genius at creating skillful means to apply the teaching, apply the practice in an ongoing and very practical way. So to actualize, to bring this quality of emptying things out or not creating fixity, solidity, Luang Por would encourage different ways of developing that perception, that way of seeing. One of the simplest, most effective, is to mindfully challenge every judgment the mind makes. Beautiful day. Is that so? Awful day. Is that so? This person's really irritating. Is that so? This person's really inspiring. Is that so? It's extremely simple, but if it's applied, simply asking that question, raising that question, it touches the intuition, the wisdom of the heart that knows, of course, it's only delicious from one point of view, if you have a tongue that is conditioned to those flavors. If you're sick and nauseous, the same chemical landing on the tongue would make you feel ill, unappealing, unattractive. The same person that's inspiring and delightful, one moment, what they say is charming and pleasing, warms the heart. The mood changes, some time goes by, and the same words with the same tone, irritating, annoying, frustrating, ugly. To develop the anicca sanya, it takes attention. We have to pay attention, not just here in the temple, sitting still, eyes closed and body motionless, but even more importantly, the body moving around, actively engaged in seeing other people, going places, doing things, carrying out our jobs, thinking, decision-making, listening. To mindfully keep track of that flow of judgments. I should, I shouldn't. This is good, that's bad. I approve, I don't approve. It takes effort. It takes a real interest, application, determination to bring the mind to attend to the moment in this way. But the results, if that is carried out, if that effort is made, has very powerful and directly liberating effects. Keeps bringing the mind, the heart, that quality of awakened awareness, free of me in here and the world out there. It loosens
the false edges that get created for me and my life, my things, the world, that person. Those edges get loosened up. When the mind applies that reflection, is that so? It judges something to be bad or good, mine or yours. Is that so? There's a relinquishing of that feeling of certainty, of definition. My plan, my opinion, what I know is good and right, what I know is bad and wrong. It loosens those edges, so that's threatening to the ego, challenging to self-view, opening the heart to the realization that I am not in control. I am not in charge. I am not the owner. So to the habits of self-view, to the ego, that's threatening, intimidating. But to the heart itself, it's liberating, of course. Most of life is mysterious. Most of life is very clearly not under any kind of personal control, even at the most basic level. The laws of physics and chemistry, biology, the laws of the workings of the mind, the interrelationship of the conditioned, the unconditioned, the laws of cause and effect. None of these are personal. None of these are individual. None of these are me or mine. Utu niyama, the laws of chemistry, physics. Bija niyama, the laws of biology. Kama niyama, the laws of cause and effect. Chitta niyama, the laws of psychology, how the mind remembers and imagines, feels, registers images, creates consciousness, processes, feeling and perception, concepts. The very fabric of reality itself. None of this is personal. None of it is under any kind of individual control. So all of that can be intimidating to the ego, to the control freak that wants to be in charge, that wants to know, that wants to be sure, that wants to have everything fixed and predictable, lined up according to its favorite. It's accustomed, familiar ordering, putting everything into their usual boxes. But what is intimidating or threatening to the ego, with wisdom, that's liberating to the heart. The citta, the heart, recognizes, of course, it's mysterious. Of course, most of life is inconceivable. It's always been that way. And when the heart opens to that, rather than feeling intimidated and fearful, it experiences wonderment. It's mystery. The heart meets the unknown and experiences it with wonderment, rather than fear. As Luang Pu Man said in his ballad of liberation from the five khandhas, knowing the unknown, that's the method for the heart. Knowing, as in awareness, being awake to, the unknown, that which is inconceivable. Being aware of that which the mind can't conceive or conceptualize, doesn't comprehend, doesn't have an idea for or a name for. Opening the heart to the way it is, even though the way it is cannot be named or described, pinned down, can't be compressed into a concept, narrowed down to a word, a form, put into a box. Like trying to pour three-dimensional tea into a drawing of a teacup. Three-dimensional tea
won't go into a two-dimensional drawing. Doesn't go. Trying to force the three-dimensional reality of the Dhamma, the way it is, into a two-dimensional concept or a word, won't go. Doesn't fit. Can't do it. Not enough dimensions. But just because something can't be conceived or explained or named doesn't mean it's not real. Doesn't mean it's not valuable. The heart can open to the unknown. Be attuned to the unknown, even if it can't describe it, name it, create a concept for it. Just like in an orchestra. If you know your instrument, you know the music, you can play in tune, in rhythm, with the other musicians, the other instruments of the orchestra. You don't have to be able to write equations for the vibration of the strings in the violins, or the air inside the drums, or the precise formula of the metal in the trumpets and trombones, the nature of the wood in the oboes and clarinets, and the particular plant that the reed came from. Not necessary. You can listen, attend, attune. We don't have to have an idea, an explanation, a formula for all the detail. So the Buddha's teaching then encourages us to not try and keep forcing the world into our judgments, our opinions, but to see them just as that. This is a particular point of view, particular conditioned perception, that's all. It can't be absolutely true, it can't be absolutely real. So when moment by moment there's a challenging of those judgments, is that so? This is awful. Is that so? I can't understand this. Is that so? Now I've got it. Is that so? Notice the effect of that. When that is mindfully, attentively brought to each judgment that the mind makes, look at the effect. What happens in the heart when that kind of reflection is actualized? There's an immediate sense of relief, spaciousness, brightness. Oh, of course. Aha. There's an ease and a naturalness. And if even asking the question, is that so, seems a bit complicated or a bit too much, Lumpur Cha's even simpler way of reflecting was to meet every judgment with, so, I like this, so, I hate this, so, I understand it, so, I don't understand it, so, this person's great, so, this person's awful, so, I'm a real failure, so, I think I've really got it, so. In exactly the same way, when that reflection is brought mindfully, attentively, moment by moment, look what happens in the heart. There's that same opening, blossoming, same brightening. Aha. The heart knows those judgments can only be partial, limited. The Dhamma itself is limitless, complete. The heart opens to the Dhamma. It knows its own nature as Dhamma in that moment. Notice that. Let that be fully conscious. Let that have its own effect. And trust that. Awakening to the Dhamma, knowing its own nature. Let that speak for itself.
का अभ्यास करते हैं। पहले मैत्री ब्रह्म विहार, मैं वैर से मुक्त हूँ, दुर्भावना से मुक्त हूँ, चिंता से मुक्त हूँ, अपनी आवश्यकताएं अपनी आवश्यकताएं सुखपूर्वक पूरी कर सकूं। अहं अवेरो होमि, अव्यापञ्जो होमि, अनिगो होमि, सुखी अत्तानं परिहरामि। अब अपने प्रियजनों को, मित्रों को, आचार्यों को मन में उनको याद करके, उनका चित्रण करके, उनके प्रति, सबके प्रति मैत्री। मम माता पितु आचार्या च नातिमित्ता च सब्रह्मचारिणो च अवीरा होन्तु, अव्यापज्या होन्तु, अनिगा होन्तु, सुखी अत्तानं परिहरन्तु। पृथ्वी की रक्षा करने वाले, हमारी अपनी रक्षा करने वाले देवताओं के प्रति आरक्षा देवता, भूमट्ठा देवता, रुक्षट्ठा देवता, आकाशट्ठा देवता अवेगा होन्तु, अव्यापज्या होन्तु, अनिगा होन्तु, सुखी अत्तानं परिहरन्तु। अब अनंत प्राणियों के प्रति असीमित अपरिमित मैत्री भाव सभी प्राणियों के प्रति, चाहे वो किसी भी लोक में हो, किसी भी रूप में हो, तटस्थ हो, बैरी हो, मित्र हो, सभी के प्रति सम्बे सत्ता, सम्बे पाना, सम्बे भूता, सम्बे पुंगला, सम्बे अत्ता भाव परियापन्ना, सम्बा इत्यो, सम्बे पुरुषा, सम्बे अरिया, सम्बे अनरिया, सम्बे देवा, सम्बे मनुष्या, सम्बे विनिपातिका अवेरा होन्तु, अव्यापज्या होन्तु, अनिगा होन्तु, सुखी अत्तानं परिहरन्तु। करुणा ब्रह्म विहार जो किताब भी हो,
करुणा ब्रह्म विहार हम सभी के प्रति शुभकामना जो दुख में हैं, परेशानी में हैं, कष्ट में हैं, किसी भी प्रकार के शरीर के कष्ट, मानसिक कष्ट, क्योंकि इस समय दुख विपुल मात्रा में फैला हुआ है संसार में। तो आए आटानाटी सूत्र से कुछ चैंटिंग करते हैं। वचसा मनसा चैव वन्दामे ते तथागते शयने आसने ठाने गमने चापि सर्वदा सदा सुखेन रक्षन्तु बुद्धा सन्ति करातुवं ते त्वं रक्षितो सन्तो मुक्तो सर्वभयैः च सर्वरोगा विनिमुक्तो सर्वसन्तापवर्जितो सर्ववैरमतिकन्तो निर्भुतो त्वं भव तेषां सच्चेन शीलेन हन्ति मिथ्याबलेन च तेऽपि त्वयि अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च पुरस्मिन् दिशाभागे सन्ति भूतामहेद्दिका तेऽपि त्वयि अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च दक्षिणस्मिन् दिशाभागे सन्ति देवा महेद्दिका तेऽपि त्वयि अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च पश्चिमस्मिन् दिशाभागे सन्ति नागा महेद्दिका तेऽपि त्वयि अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च उत्तरस्मिन् दिशाभागे सन्ति यक्षा महेद्दिका तेऽपि त्वयि अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च पुरस्मिन् दशरथो दक्षिणेन विरुलको पश्चिमेन विरूपको कुबेरोत्तमं दिशं चत्वारो ते महाराजा लोकपालाय सस्सिनो तेऽपि त्वयि अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च आकाशट्टा च भूमट्टा देवानागा महेद्दिका तेऽपि त्वयि अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च सब्बीतियो विवर्जन्तु सर्वरोगो विनश्यतु नाते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। कृतज्ञता ज्ञापन उनके प्रति जो इस कठिन परिस्थिति में सबकी सेवा में लगे हुए हैं। सभी विभिन्न प्रकार की सेवा कर रहे हैं, कोई उपचार कर रहे हैं, कोई आवश्यक वस्तुएं पहुंचा रहे हैं, कई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किए हुए हैं। इन सब के प्रति कृतज्ञता, आभार। आए हम सब अपने पुण्य सब साझा करें इस शुभेच्छा से कि वे सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, कोई व्यवधान ना आए, कोई उन्हें परेशानी ना हो।
पुण्यस्य इदानि याना अन्यानि कथानि मे ते सञ्च भागिनो हन्तु सत्तानन्तपमानका। मुदिता ब्रह्म विहार। बैलेंस करने के लिए हमारे अपने मन को, उन सबको याद करें जिनको हम जानते हों, उनके घर में खुशी है किसी भी कारण से, और उनको याद करके जो इस महामारी में स्वस्थ हुए हैं, निरोग हो गए हैं, वे सभी स्वस्थ बने रहें, उनकी सुख संपत्ति बनी रहे, कोई व्यवधान ना आए, कोई तकलीफ़ ना आए, ऐसी शुभकामना करते हैं और उनके प्रसन्नता में भागीदार होते हैं। वातावरण के स्वच्छ होने में जो पशु पक्षी प्रसन्न दिखते हैं, उनकी प्रसन्नता में भी हम शामिल हो सकते हैं। यथा लब्धा सम्पत्तितो मा विगच्छन्तु। अपेक्षा ब्रह्म विहार बहुत महत्वपूर्ण, ताकि न दुख में न सुख में समता हमारी न टूटे। साधना करने वाले भी मैत्री करते हुए समता बनी रहे, करुणा विहार करते हुए समता बनी रहे, मुदिता ब्रह्म विहार कर अभ्यास करते हुए समता बनी रहे। उसके लिए प्रज्ञा का होना आवश्यक, सम्यक दृष्टि का होना आवश्यक। तो हम सबकी दृष्टि सम्यक हो, सभी प्राणियों की दृष्टि सम्यक हो, ताकि दुख का कारण ठीक से समझ सकें। लोकीय स्तर पर अपने कर्मों को दुख का कारण समझते हुए हम मन में रोष न जगाएं, द्वेष न जगाएं। तो भगवान की वाणी को याद करते हैं। कम्मस्य का कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिसरण यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। जैसे हम कर्म कर रहे हैं वैसा ही हमारा भविष्य होगा। हम सब कुशल कर्म ही करें, इसके लिए आवश्यक कि हमारी दृष्टि सम्यक हो। चार आर्य सत्यों को ठीक से समझें, ताकि दुख के वास्तविक कारण को, तृष्णा को पहचानें और उसका त्याग कर सकें। तभी उपेक्षा ब्रह्म विहार, उपेक्षा बोधि का अंग बनता है, उपेक्षा पारमी बनती है। जो इसको ठीक से समझ के चार आर्य सत्यों को समझ के मन में उपेक्षा भाव स्थापित करते हैं, तभी सभी प्राणी सुखी होंगे। जब ऐसा हो पाएगा, हम सब मिलकर ऐसी शुभेच्छा करें कि सभी प्राणी की दृष्टि सम्यक हो, दुख के कारणों को ठीक से समझें और उनका निवारण कर सकें। सर्वे सत्ता सुखी होन्तु, सर्वे होन्तु सुखिनो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् पापमागमात्, मा किञ्चित् शोकमागमात्।
मा किञ्चिदुःखमागमात् भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोति भवन्तु